consultation while recording, but not really contribute, would not like to speak up, but they would like prompt other people and say, okay, say this, say that. So that is participation as well. सौभाग्य मानता हूँ कि इतने बड़े मंच दलित लोकवाणी का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था सन 2007 में जुलाई से, और इसको पूरी तरीके से जो हमारा सपोर्ट किया है वह है यूनिसेफ की तरफ से, और जो इसका लाइसेंस है वो साइन ज्योति संस्था के पास में है। और इसके बाद बहुत सारी एक्टिविटी के बाद इसकी शुरुआत जो हुई है वह है सन 2010 में 3 सितंबर को। और रेडियो के पहले की बात अगर हम बात करें, जब उस समुदाय में रेडियो नहीं था, सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे पास की रेडियो के सुनने के लिए लोगों को प्रेरित करना। वहाँ पर बहुत ही कम घरों में रेडियो मिला करता था, और उसके बाद फिर लोगों के बीच में इस तरीके की हैबिट डालना कि आखिरकार रेडियो सुनना क्यों जरूरी है और हम रेडियो लेकर आए हैं, वैसे क्यों लेकर आए हैं आपके बीच में, ये सारी बातों का हमें सामना भी करना पड़ा। और भी बहुत सारी चुनौती रही। जब रेडियो स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ प्रोग्राम भी देने पड़ते हैं, और साथ साथ में कुछ मनोरंजन के साधन भी होने चाहिए। इस तरीके की सुविधाएं हमारे पास एक भी प्रकार से नहीं थी, और फिर हमने एक तरीके से शुरुआत की, और 1 घंटे के ब्रॉडकास्टिंग के साथ हमने इस तरीके की शुरुआत की। और पार्टिसिपेट, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेट के तौर पर हमने एक सिंगर का गाना स्टार्ट किया, जहाँ पे लोगों को बुलाया और एक कम्युनिटी पार्टिसिपेट के तरीके से उनको उसमें भागीदारी के लिए पूरा मौका दिया, और जो हमारे लिए बहुत ही भरोसेमंद रहा और बहुत ही सहायता के लिए रहा। और फिर उसके बाद में अब जब मनोरंजन की बात होती है तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें भी होती हैं कि हमें फिल्मी गीत भी सुनना चाहिए। तो यह शुरुआत में काफ़ी चैलेंजिंग था कि लोगों को हम बुंदेली लोकगीतों से कैसे जोड़ के रखें, लेकिन आज लोगों की मांग नहीं है कि हमें बुंदेली गीत के अलावा और कुछ चाहिए है। कभी कभी हाँ, मनोरंजन के लिए कुछ फिल्मी गीतों में हम 1960 के पहले के लोकगीत फिल्मी सॉन्ग जरूर डालते हैं, अदरवाइज तो हमारे सिर्फ और सिर्फ लोकगीत ही चलते थे। और उसके बाद अभी तक हमारा मोर देन 120 विलेज में कवरेज है। साथ साथ में हम जो टारगेट कमेटी है उसमें शहरिया हैं, अहलवार हुए हैं, फार्मर्स हैं, और साथ साथ में हमारे फोक आर्टिस्ट हैं। उनके लिए अभी तक कोई ऐसा मंच नहीं था जहाँ पर कि हम अपनी इस कला को निखार सकें, और साथ साथ में फार्मर्स के लिए भी वहाँ पर इस तरीके का कोई भी मंच नहीं था कि जहाँ पर उन्हें पता चल सके कि हम आखिरकार खेती कैसे करें। उसके बाद में जो भी गोष्ठियाँ होती हैं हम उनको कवरेज करते हैं, उन कवरेज हुई गोष्ठियों को हम रेडियो से प्रसारण करते हैं, तो इसमें बहुत ही असरदायक ये हमें लगा है और लोगों तक इसकी बात पहुँचती है। तो वो क्योंकि गोष्ठियों में हर लोग नहीं पहुँच सकते, तो रेडियो के माध्यम से यह बात सारे किसानों तक पहुँचती है। जो आज हमारा प्रसारण समय है वह 5 घंटे का है, 7 to 12 एंड मॉर्निंग 3 to 8। आप हमारा 5 घंटे का प्रोग्राम एकदम फ्रेश होता है मॉर्निंग 7 to 12। और इसके बाद में हम संडे को एक स्पेशल प्रोग्राम रखते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों के फोन रिक्वेस्ट पे उनके लोकगीत सुनाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं जो हमने अभी फरवरी से जो स्टार्ट की है 5 घंटे प्रोग्राम की मॉर्निंग आपका 7 to 12, उसमें 5 घंटों में उसको बांट दिया गया है। हमने जब एक पूरा प्रशिक्षण लिया तो उसके जरिए पता चला कि हम कहीं ना कहीं 5 मुद्दों में पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमने इनको एक शो के तरीके से तैयार कर दिया है। अगर हम ग्रामीण उन्नयन की बात करते हैं, विलेज डेवलपमेंट, तो इसमें रिलेटेड सारी ही बातें इसमें हो जाएंगी 1 घंटे के अंदर अंदर, और पर डे नए इशू इसमें अपडेट होते रहते हैं। इसी तरीके से युवाओं के लिए अजीब का है, या फिर आफ्टर 12 जैसे क्वेश्चन रखते हैं कि हम क्या करें गाँव में आफ्टर 12 के बाद, तो इस तरीके की सारी बातें इसमें आपकी आ जाती हैं। जो अजीब का वाला प्रोग्राम है और ट्रेनिंग की और युवा हमारे आगे कैसे बढ़े, इस तरीके से होते हैं। और जो 9 to 10 है इसमें आपके पिछड़े वर्ग के अधिकार हैं एवं उनके लिए स्वास्थ्य, उनके लिए आपके कानून की सहायताएं, ये सारी बातें होती हैं। और फिर उसके बाद में होता है हमारा बाल अधिकार, और बाल अधिकार में आपके बच्चों के स्वास्थ्य, उनके राइट्स और उनके एजुकेशन से संबंधित सभी बातें, माता पिता उनका ध्यान कैसे रखें, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो उसमें इंक्लूड होती हैं। इसी के बाद में फिर होता है हमारा महिला सशक्तिकरण। हमने कहीं भी मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कहीं ना कहीं हर प्रोग्राम में महिला का पार्टिसिपेट होना चाहिए, क्योंकि अगर सबका नजरिया देखने का अलग होता है। अगर पुरुष सोचेंगे कि अपने घर के विकास के बारे में, तो वो सोचेगा एक छत होना चाहिए, उसके अंदर फिर एक मोटरसाइकिल भी होना चाहिए, पंखा भी होना चाहिए, कूलर, इस तरीके से। लेकिन महिला सोचेगी यार बच्चे को अच्छी तरीके से आपको पढ़ाना लिखाना चाहिए, और उसके बाद में साथ ही साथ में आपका घर की साफ सफाई होनी चाहिए, मेरा व्यवहार पड़ोसी में अच्छा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूँ कि इन सबकी भागीदारी बराबर रहे। 50% मैं अभी ला नहीं पा रहा हूँ, बहुत ही कम इस तरीके से भागीदारी होती है।
the little what I know, let me share this. So the background is something like this, like Dan started its coastal area program after the tsunami disaster. After the 2005, he started the program, and being an NGO, we have a lot of livelihood programs like women SSGs, fishermen, then agriculture, the coastal areas, land reclamation, panchayat development, and one important component for the village information center or the village knowledge centers. So during the year when we did not know what community radio is, at that time still we were proceeding with this concept called the village information center. At each of the panchayat we had a knowledge center or information center which has computer, which has internet, has interactive multimedia in local language. Then what we did is we put some loudspeakers for narrowcasting of the audio content generated from the village. Then we work for various sectors, agriculture, fisheries, women, health, rights, legal aspects, education, lot many things. And using the internet, we also tried some kind of a video interaction or a video conference across the villages. Then some kind of computer education. And the most important part, the community aspect, is something like these centers are owned, say, managed, operated by the villages, and one of the persons, one lady from that village, is trying to take care of the center. And probably what Dan did is Dan gave the initial infrastructure, the computers, the internet, but the day-to-day things they'll have to take care. But one of our person, one staff member is there to guide and do those things. And community also contributed in terms of providing building, electricity, advisories. Then also they were helped in the need assessment, generating content, validation, a lot of things the communities they used to do. This was our the approach. And in the year 2006, the narrowcasting we were doing it, and the concept of this community radio was introduced to us by one person called Green India. They said, why don't you do this? Because they had a project with the UN India and they were unable to do it. So then we started this work, and it was in the village called Vindamavadi, Nagpur district, and 90.8 FM was the frequency allocated to us. And we started in the year 2009, the formal broadcasting. But till then it was on narrowcasting. Then the voices at Bangalore, they gave technical support as well as UNDP for the financial. So this is how this radio from the start, it is say owned by a large group of people, particularly the poor people from the women, the farmers and the fishermen of that particular area. And the only thing is Dan is playing some kind of bridge role across the various partners. And how community got involved in setting up the radio, something like they purchased their own land from their own funds. You might be wondering how they got funds. Maybe they got it as a grant during the tsunami time. But still, they once again brought it back to the Federation as a common fund with which they purchased land, they constructed building. And only one problem was that the license was taken away Dan's name, because that time the people's organization was not registered. So Dan helped in by putting our name for the license. And there are various committees for planning, executing, supervising, all the works. And it is something like a complete ownership by the people. And the community involvement in three distinct areas. One is the operational management of the community radio. The management committee is there to look into the overall management aspects related to administration, technical, legal, all other things. And then there are some sub-points under it, which is mentoring new stations, codes and practices, sustainability targets, and volunteer-driven model. Before I hand over to Ramki for his 20-minute presentation, post which I'll make some closings and then open out the floor for at least about 40 minutes for Q&A, so that will be the biggest Q&A of the day. I would
like to make a few opening remarks. Sustainability has been our white elephant, black monster. Since the time we started not just community radio but any intervention with the community. I would basically put a position here that community media, not just community radio, are projects taking place in economically underprivileged areas by definition. And interventions, in these interventions cannot be sustainable without public investment. If you expect poor people to completely sustain an intervention like community radio entirely by revenues generated from their otherwise resource-lacking areas, it is unfair. Just as it is unfair for anybody to feel कि हमारे गांव में जो स्कूल चलता है या अस्पताल चलते हैं उसको हम कहते हैं कि लोग अपना सस्टेनेबल कर दें, तो वो होगा नहीं, होना चाहिए भी नहीं। एक सोसाइटी की जवाबदारी, एक जिम्मेदारी होती है कि वो कुछ इंटरवेंशंस को अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर से सस्टेन और खड़ा करे, जिसके एक्सपीरियंसेस यहाँ पर सूर्य के पैनल में साउथ अफ्रीका और अमेरिका वगैरह ने यहाँ रखा। The good is that with the commitment and passion of our friend in the movement, Supriya, we are moving in that direction of setting up a community radio support fund, which I think there is the more we talk about it, it is less, the importance of that. So though sustainability should be a concern, we must not be forced and pressurized by this monster for sustainability. And I use this word monster not in joke. However, there are other areas of sustainability that we should be concerned about. And that is program and social sustainability. Some amount of that discussion happened in the second session. How do you sustain a community radio with relevant programming? How do you ensure that keeps happening? And how do you ensure what Ajendra was saying? The ultimate test of any community intervention is, does the community want it to survive? If the community says, I don't care, आपका रेडियो चलता है या नहीं चलता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आपको फंडिंग नहीं मिला, बंद हो गया, मेरा था नहीं, आपका था, आपकी दुकान बंद हो गई तो मेरा था। अगर ये आपको फीडबैक मिलता है, तो आपका सेशन बंद होना ही चाहिए, हो ही जाना चाहिए। अगर कम्युनिटी कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सेशन से, तो आपकी कम्युनिटी स्टेशन बंद होना ही चाहिए। It should close down. If it is in the community space, I don't care about your intervention and I don't want to invest in it, then it is best that that intervention dies. Now, the second point about volunteer-driven model, this has also been debated and discussed since the beginning of the movement. How fair is it for us to expect poor people to volunteer? In any program or project or intervention, the volunteer model does not work if those suggesting volunteerism are themselves paid to do their job. आप वॉलंटियर बने, आप अपना समय दीजिए, आप मुफ्त में काम करिए, ये कहने वाले लोग जब तनख्वाह पर हैं, तो वो वॉलंटियरिज्म मॉडल चलने वाला नहीं है, because there is an inherent disconnect and paradox in that. So you will see across experiments in the country, in the world, that wherever the call for volunteerism has come from those who themselves are volunteers, it has succeeded. And wherever the call for volunteerism has come from those who are professionals, quote unquote, it has not succeeded. Thank you. And finally, another point that I'm trying to make here, which is in extension to what my friend Ram mentioned in the last intervention about how much can communities control. To me, community radio is not, capital N-O-T, not about participation. For me, participation is a 4-letter word. Participation, 4 अक्षरों का शब्द है. Thank you. It's a good
about participation, we need to define who's the participation. I mean, who's deciding that here's a project and please you come and participate. It's community radio. Communities should be deciding that they need the participation of the experts, the consultants, the foundations, the grant makers, the governments, the departments. It should be the other way around. Instead of that, we are sitting here to say, how do you make community radio participatory? You got it wrong. This may be the initial process of going towards community ownership, but we cannot hide under this blanket saying my station is very participatory. It doesn't end there. It only begins there. Your station has to be owned and managed by community. And therefore it does not remain your station. Whoever that you wish, however you define it. These are some of the thoughts that I would like to flag. And Ramki's presentation may or may not touch on any of this, but I would hope that in the discussion that follows, the question and answers that follow, you'll be able to take from what I have flagged and from what he's going to present and think about this together. We will hope to make this session an interesting session on figuring out what is sustainability. Let's begin at that. Not how much is sustainability. What is sustainability? How much I know? We got some figures. 1 lakh per month, 25,000 per month, maybe it is 3 lakhs per month. I know those figures. But what is sustainability? Let's have some discussions around that. Another thing to flag out, which is taken from the title, expansion. There is an intrinsic problem with that word expansion, because when you talk about expansion, are you talking about expansion of your community radio station? Or are you talking about expansion of the movement for community radio and therefore its future success? Because a community radio as defined in this country is not expandable by definition and by law beyond a certain point, which is 100 watts, 50 watts. So geographically you are bound until the time that we all collectively decide to change that policy. So are we talking about expansion of ownership? Expansion of the idea in our mind of the paradigm that are we the givers and they the takers, that expansion? Or are we talking about finance and program and expanding from 1 hour to 15 hours? These are the things that we have to keep in mind for the session. So with that, thank you. Good news on this front